ठीक खुश आहियो। पढ़ाई हले थी पई, महिनत कंदा रहो। काई भी डिफ़िकल्टी हुजे, जेके प्रीवियस लेक्चर्स असां पढ़िया आहिनि, उहो हुन में जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी डिफ़िकल्टी हुजे त तव्हां मूंखां पुछी सघो था पिया, व्हाट्सअप जे ज़रिए, कॉल्स जे ज़रिए, जहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे सहूलियत थिए मूंसां पाण कॉन्टेक्ट कयो। इंशाअल्लाह मां तव्हांजी मुकमिल हेल्प कंदुसि। अॼु असां गैसिस स्टेट जे आख़िरी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जी आख़िरी स्टेट जेको आहे उहा असां डिफाइन कंदासीं ऐं उहा आहे सॉलिड स्टेट। जीअं त शुरू में असां सॉलिड स्टेट जी डेफिनेशन कईसीं, हिकु दफ़ो वरी मां हुनखे रिपीट कयां थो पियो। द स्टेट ऑफ मैटर which is rigid, hard, have definite shape and volume, also size, that is known as solid. By definition, the substance that have definite shape and volume, that is known as solid. And solid जी या property आहे तो वे hard and rigid पे हूंदा आहिनि, because the constitute particles of solid. कहिड़ा आहिनि उहे? These are atoms, ions and molecules. इन particle जो solid ठहियल हूंदो आहे। The constitute particles of solid are held together by strong attractive forces. Strong attractive forces जे करे उहे particles पाण में बाउंड हूंदा आहिनि, स्ट्रांगली उहे मूव न कंदा आहिनि। इन जे करे पोइ सॉलिड सबस्टेंस जेको आहे उहो हार्ड बि हूंदो आहे, रिजिड बि हूंदो आहे। इन प्रॉपर्टी जे करे, हार्ड ऐं रिजिड हुजण जे करे, उन जूं ॿियूं प्रॉपर्टी बि जेके आहिनि से उहे बाक़ी स्टेट ऑफ मैटर खां चेंज हूंदियूं आहिनि। जीअं मेल्टिंग पॉइंट ऐं बॉइलिंग पॉइंट आहे, जेकॾहिं अट्रैक्टिव फोर्सिस स्ट्रांग आहिनि त पोइ उनजी मेल्टिंग ऐं बॉइलिंग पॉइंट बि हाई हूंदी आहे। तो अहिड़े नमूने सां सॉलिड खे फर्दर क्लासीफाई कयो वेंदो आहे ॿिनि क्लासिस में। हिकिड़ो आहे क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐं ॿियो आहे अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस असां अॻिते स्टडी कोन कंदासीं, घणो घणो जो कॾहिं असांखे जो प्रॉपर्टीज़ ऐं उनजे बारे में स्टडी करणी आहे उहो असां सिर्फ़ु क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जे लाइ स्टडी कंदासीं। एमॉर्फस सॉलिड खे सिर्फ़ु एतिरो चवंदासीं जीअं नाले मां ज़ाहिर आहे। हीअ जेका पहिरीं जेका ए इंडिकेट थियल आहे, हिन जो मतिलबु आहे नॉट। मॉर्फस जो मतिलबु आहे शेप। जंहिं सॉलिड खे शेप न हुजे, जंहिंखे असां चऊं शेपलेस, विदाउट शेप, उन्हनि सॉलिड्स खे जेको आहे एमॉर्फस सॉलिड चइबो आहे। जंहिंमें ख़ासि तौर ते गिलास आहे, जेके प्लास्टिक्स आहिनि, या रबर टाइप मटीरियल आहे, रबर वग़ैरह, इहे जेके आहिनि इहे एमॉर्फस सॉलिड्स आहिनि। पर इन्हनि खे असां फर्दर डिटेल में स्टडी न कंदासीं, असां पढ़ंदासीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स छा आहिनि? बेसिक चए त उहे सॉलिड्स जंहिंमें
the solids having definite geometrical shape. They constitute particles हिकिड़े geometrical बुनियाद ते उहे पाण में अरेंज थियल हुजनि, definite pattern तहत उहे पाण में अरेंज थियल हुजनि in their edges and their accurate angles. तो उन्हनि खे असां पासो crystalline solid जेको सो चऊं था पिया, जंहिंमें फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आहे, जंहिंमें सोडियम नाइट्रेट आहे, खोड़ सातरा जी जेके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहिनि, फॉर एग्जांपल शुगर आहे, फॉर एग्जांपल आयरन आहे, गोल्ड आहे, आइस आहे वगैरह वगैरह, ये सब एग्जांपल जेके आहिनि, डायमंड आहे, ये सभई एग्जांपल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अचनि था पिया। हाणे असां अॻिते पढ़ंदासीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, यानी जंहिंसां ईज़िली असां डिस्टिंग्विश करे सघूं त उहे कहिड़ियूं प्रॉपर्टीज़ आहिनि जेके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में थियनि थियूं पयूं ऐं जेके वरी क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स में जेके आहिनि उन खां उहे डिफर कनि।